Good morning, students. Today we will start a new topic, editing text objects. Previous session, we have already learned how to change layout, how to rearranging slide in the outline tab, how to rearranging slide in a slide sorter view. You can rearrange your slide to in a different view, like a slide sorter view, like a outline tab view, like a normal view. Okay. So today's you will learn how to editing text object in a slide. Now let's start. It is important to know how to perform basic tasks with text while working in PowerPoint. जब भी आप PowerPoint के अंदर वर्क करोगे, you can apply a different basic task with the text. And जब भी आप PowerPoint के अंदर या स्लाइड के ऊपर काम करोगे, तो that's you can use the basic task with text. आप टेक्स्ट के साथ जो छोटे छोटे बेसिक टास्क है वो भी आप पावर पॉइंट के अंदर यूज कर सकते हो. The text you type in placeholder such as title, subtitle, etc. You can type your text in a different two modes like title placeholder and subtitle placeholder. You have already learned in a previous session how to insert a text in your slide. There are two ways you can insert a text in your slide. First one, title placeholder. Second one, subtitle placeholder. You can insert your text in a slide two way, title placeholder and subtitle placeholder. Suppose if you want to insert a heading in your slide, so you can insert your text in a title placeholder. So you can see this is a title placeholder. You will insert a heading in a title placeholder. Suppose if you want to insert a subtopic related to a main topic, okay, that's you will do it with the help of subtitle placeholder. So you can see this is a subtitle placeholder. You can insert a small topic related to a main topic. Okay, so there are two ways you can insert a text in your slide. First one, title placeholder, and second one, subtitle placeholder. You can see this is the first one, title placeholder, and second one, subtitle placeholder. And also you can be modified only in the normal view. मगर आपको जो भी वर्किंग करना है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी चेंजेस करना है स्लाइड के अंदर, यू विल डू इट, बट यू कैन एडिट और चेंजेस ओनली इन नॉर्मल व्यू. मगर आपको जो भी चेंजेस करना है, जो भी एडिट करना है, आप सिर्फ वो नॉर्मल व्यू के अंदर ही कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स हाउ टू एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, you can open the slide in which you want to edit the text. तो पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्लाइड आपके पावर पॉइंट के अंदर ओपन करनी है. यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ओपन अ स्लाइड इन माय पावर पॉइंट. Similarly, you will open a new slide in your PowerPoint. How to insert a new slide in PowerPoint you have already learned in previous session. Okay, again I can discuss the how to insert a new slide in your PowerPoint. You can go to the home tab. Okay, you can see this is the home tab, and you can click on the new slide drop down menu. Okay, when I will select the new slide drop down menu, so you can see there are many
slides are appears on a new slide tabs. You can choose any ones and insert a new slide in your PowerPoint. Okay, so similarly you can insert a new slide. Okay, you can use this method and you will add multiple slides in your PowerPoint. Okay, तो फर्स्ट वन ओपन द स्लाइड, आपको वो स्लाइड ओपन करनी है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं. ओके, फर्स्ट ओपन द स्लाइड इन विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट. किस स्लाइड में आपको टेक्स्ट के अंदर वर्क करना है, किस स्लाइड में आपको एडिटिंग करनी है. तो फर्स्ट यू कैन ओपन योर स्लाइड इन अ पावर पॉइंट. सेकंड वन, click on the text, a placeholder will appear. So when you will take a cursor on your text, there's a placeholder appear on your slide. You can see I can select a heading in a title placeholder. So you will see that a placeholder appears around on my text. Okay. Suppose if I want to select a subtitle subpoints in my slide, so I can select this text. So you can see a placeholder appear around the subtitle. Okay, आप जहां भी कर्सर रखोगे आपके टेक्स्ट के ऊपर, उसके ऊपर आपको प्लेस होल्डर appear होगा. ओके, यू कैन सी. थर्ड वन, place the cursor point, place the cursor at that point where you want to edit the text. अभी आपको किस प्लेस होल्डर में एडिटिंग करना है. ओके, तो देन यू कैन टेक अ कर्सर on your text and you can do it, you can edit your text. Okay, suppose I want to edit a text in a title placeholder. I can take a cursor in a title placeholder and I can replace a year 2020 21 to 2021 to 22. Okay, I can replace year 2020 to 21 to 21 to 22. Okay, so you can replace your text. Okay, so first you can take a cursor where you want to edit. आपको किस टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग करना है. First you can take your cursor in which location and you can editing on your text. Suppose I want to replace a text. Suppose I want to replace a word from the subtitle placeholder like a cricket to a basketball. अभी मुझे लग रहा है कि मुझे जो क्रिकेट वर्ड है उसको रिप्लेस करना है बास्केटबॉल को. तो I can select the subtitle placeholder. Okay, I can take a cursor where you want to replace my word. Okay, and I can delete this text. I can assign a new name or take a different name. Okay, in which subtitle placeholder I can replace cricket word to a basketball word. Okay, अभी मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ क्रिकेट को बास्केटबॉल से. Similarly, you will assign a different name, okay, to your text. First, you can select your placeholder. Then you will take a cursor where you want to change, where you want to edit your text. Then you will do it. उसके बाद आप कर सकते हैं. Now make the required change in the text. आप देख सकते हैं कि आपके जो टेक्स्ट में है वो चेंजेस हो गए हैं. Then after editing the text, finally you will complete your works
click on the save button, you can go to the save button on the quick access toolbar. You can see this is a quick access toolbar, and you can select the save button and to save the changes. So you can save changes on your file. तो इस तरीके से आप अपने चेंजेस अपने फाइल में सेव कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.